Now let's understand how to print something on a screen and how to take something from a user. Okay, so very first we are going to see how to print something on a screen. That means how to print an output on a screen. So in order to print something on a screen, you have one function called as print function. Okay, so this print function is used to print something on a screen. Okay, so let's say let's take an example. If you want to print a string, say suppose if you want to print a hello world, then you have to write something like this: print, and then inside a double quotes, whatever the sentence you write, it will display on a screen. Okay, so in this particular thing, you are in this way you are going to print hello world on a screen. Let's say if you want to print a variable. Okay, say suppose if you have a variable. Okay, as you can see, this is nothing but a variable whose value is 10, and if you want to print a value of a variable, then you don't have to write double quotes. Okay, you just have to write the name of a variable, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके, सो मुझे a की वैल्यू प्रिंट करनी थी, तो जस्ट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बस लिख दिया प्रिंट a. Okay, so in this way we can print the value of a variable. If I want to print something like this, the value of a is equal to 10, that means now what I want to do is I want to print string as well as the value of a. Say suppose I have one thing. Okay, so I want to print string along with the variable value. So what I will write here is that I will write something like this: print followed by the followed by a string that I want to print on a screen, and the variable name whose value I want to print. Okay, so the output of this particular variable this output of this particular statement will be variable of a, value of a. Okay, the output will be value of a is equal to the value I consider over here is this, so value of a is equal to 10. So this will be the output of your this particular statement. Okay, so let's execute these statements one by one. Okay, okay, so this is my Python shell. Okay, in which I can execute my Python code. Okay, you have two different mode. One is your interactive mode and second one is your scripting mode. So right now I'm using interactive mode because I want to write only one or two statements. If you want to write a proper program, that means if you want to write a script, okay, then you can use scripting mode. So right now I want to use right now I'm using interactive mode. So let's say if I want to print hello world, then I will write print, and inside that I will put double quotes, and then I will write hello world. Okay, so say suppose something like this. So if I press enter, then as you can see, hello world is displayed on the screen. So print statement is basically used to display something on the screen. Say suppose I have one variable whose value is, say suppose 10, and I want to print the value of variable a, then I will write simply the variable name, which is nothing but a. So as you can see, the output is nothing but the value of a. If I want to print value along with a proper message, then I will write something like this: print the value of a is equal to. Okay, so this particular thing will display as it is, and now I want to print the value of a. So what I will do, I will simply put an comma over here just for separation, and then I will write variable name whose value I want to print. So right now I want to print what? I want to print the value of a. That's why I'm writing a over here. Now if I press enter, as you can see, this particular thing is displayed as it is, and instead of this, the value of this particular variable is printed over here. So as you can see, 10 is printed over here. Okay, so in this way you can use print statement. So you can use print statement to display a message or display a value of a variable or display some string on a screen.
Okay, so this is nothing but the print function. Now let's say how input function works. Okay, so input function is basically used to take an input from a user. Okay, so क्यों हम लोगों को क्यों लगता है ये इनपुट फंक्शन? कॉमन सेंस है. इफ आई वांट टू प्रिंट add, if I have two variables, okay, let's say if I have two variables with me, a is equal to 10 and b is equal to say suppose 20, तो अगर मुझे इसकी एडिशन करनी है तो आई विल राइट समथिंग लाइक दिस, a प्लस b. ओके, दैट्स इट, एंड मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा. बट हमेशा मुझे 10 एंड 20 की एडिशन करनी है क्या? नो, ऑब्वियसली नो. देयर मे बी अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे 40 एंड 50 की एडिशन करनी है. सो विल आई चेंज 40 एंड 50 अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट? नो, ऑब्वियसली नॉट. मैं हर टाइम थोड़ी ना ए की वैल्यू और बी की वैल्यू चेंज करता रहूँगा, नहीं करूँगा. सो इन दिस केस यू कैन आस्क अ यूजर, ओके, कि भाई तुझे कौन से दो वेरिएबल की या फिर कौन से दो वैल्यूज की तुझे एडिशन करनी है. एंड व्हेन यू आस्क अ यूजर, दिस इज नोन एज taking an input from a user. Okay, so in order to take an input, you have one function called as input function. Okay, so this is basically used to take the input from the user. So let's execute this particular thing. Okay, चलो इसको execute करते हैं. Okay, so right now I will use scripting mode. So as you can see, मैं file में गया and new file किया है. Now this is nothing but my scripting mode. Here I will ask user. Okay, I will create one variable name. Okay, and I will ask user to enter your name. Okay. ओके, एंड जो भी यूज़र ने वैल्यू डालेगा उसका जो भी नाम रहेगा वो नेम वो पर्टिकुलर वैल्यू किस में आ जाएगा, नेम वेरिएबल में आ जाएगा. ओके, फाइन. एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम. सो से सपोज योर नेम इज इक्वल टू, आई विल पुट अ कॉमा एंड आई विल place a variable name. Let's save this program. Okay, say suppose मैं इसका नाम कुछ दे देता हूँ. say suppose इसका नाम दे रहा हूँ मैं input demo.py. so as you can see, every Python program will save with this particular extension, which is nothing but .py extension. Okay, so let's execute this particular program. Go to run and then go to run module. Okay, so as you can see, this particular thing is waiting for me to enter something over here. That means this particular thing is now expecting some input. Okay, so say suppose if I write something like this, my name is say suppose Ramesh. Okay, and now if I press enter, then the rest of the program will execute. so your name is equal to, जो मैंने input डाला था वो input मुझे क्या हो गया, वो input मुझे वहाँ पे दिख गया. so इसीलिए उन्होंने एक point है, when input function executes, the program flow will be stopped until the user has given an input. यही हुआ था, बराबर है. हम लोगों का program flow stop हो गया था, वो wait कर रहा था to enter something. Okay, so the text or message display on the output screen to ask a user to enter a value is optional. That means this particular thing is optional. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे जो भी प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम में मैंने ये जो स्ट्रिंग पास किया है, ये स्ट्रिंग इसे हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट. सो दिस इज नोन एज प्रॉम्प्ट, जो यहाँ पे डिस्प्ले होता है. ओके, सो वॉट एवर यू राइट इन बिटवीन दिस डबल कोट्स ना, से सपोज एंटर योर वैल्यू, मैंने कुछ ऐसे लिखा. ओके, नाउ लेट्स सेव दिस एंड अगेन रन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो एज यू कैन सी, जो भी मैं लिखूंगा वो एज इट इज प्रॉम्प्ट में यहाँ पे दिखाई देता है. ओके, सो दिस थिंग इज ऑप्शनल. अगर आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो वो कुछ नहीं यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. ओके, सो इनपुट फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड रहती है, विच बेसिकली इज नोन एज प्रॉम्प्ट, जो आपको स्क्रीन के ऊपर एज इट इज दिखता है. ओके, सपोज इफ आई नाउ write cs something, then your name is cs. so this is known as what, this is known as taking input from a user. so what it will do is it will simply take some input from a user. It will store this particular
whatever the value user enters, it will store that value inside a given variable, and now you can use this variable whenever you want. Okay, so ये वैसे हम लोग इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं. जो प्रॉम्प्ट रहता है इट इज ऑप्शनल. ओके, सो इफ आई से सपोज अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, ओके, क्योंकि उन्होंने बोला है ना इट इज ऑप्शनल. से सपोज मैंने कुछ लिखा ही नहीं. नाउ लेट्स सेव दिस एंड रन दिस. सो एज यू कैन क्लियरली सी, ये मुझे कोई भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है. ये दिस पर्टिकुलर थिंग इज जस्ट वेटिंग फॉर मी टू एंटर समथिंग. ओके, से सपोज मैंने कुछ ऐसे डाला राज करके. Now your name is Raj. So this particular thing यहाँ पे जो रहता है ये prompt रहता है. This is optional. Okay. So अगर आपने जो भी कुछ लिखोगे आप, that will be displayed on a screen. Okay. Now let's understand one more thing. Whenever you enter as an input, okay, whatever you enter as an input, the input function will convert it into string. That means if you enter an integer, it will still convert it into string. Now let's see ये क्या बोल रहा है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. Say suppose I want to add two variables. Okay, so I will take input function over here. Okay, I want to take input value of a, enter value of a. I will print something like this. Okay, b is equal to, say suppose, input enter value of b. Okay, fine. Now say suppose if I print a plus b. Okay, so let's save this program and run this particular thing. Okay, this particular thing is now waiting for me to enter some value for a. So I will say suppose मैंने यहाँ पे डाल दिया 10. Now this is waiting for me to enter some value of b, say suppose 20. Now the expected result is what? 10 plus 20, which is nothing but 30. Now let's look at the output. Output is what? 10, 20. ये combine होके आ रहा है. चलो ऐसे क्यों हो रहा है देखते हैं. लेट्स रीरन दिस पर्टिकुलर थिंग. इफ आई प्रेस से सपोज 45 and 50, expected output is what? 95, but we are getting 45, 50. Can I say that ये जो दो नंबर्स में डाल रहा हूँ मैं, दो नंबर्स इसको मेरा पाइथन कंबाइन करके दे रहा है. even though these are integers, your input function will convert this numbers into what? String. And that is what is written over here. कि आप जो भी कोई भी डालो, आप कोई भी चीज डालो, it will basically converted into what? It will converted into string. And when you add to string, वो क्या हो जाते हैं? join हो जाता है. इसीलिए आपको वो आउटपुट में क्या हो रहा था? आउटपुट में आपको स्ट्रिंग को ज्वाइन होके मिल रहा था, विच इज नथिंग बट कॉन्कैटिनेशन. ओके, सो तो ये सारे वे को, मतलब इफ आई वांट टू ऐड टू इंटीजर्स, ओके, इनपुट फंक्शन से मैंने दो इंटीजर्स लिए, उनको मुझे ऐड करना है, तो वो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं आप कर पाओगे. सो व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, यू हैव टू कन्वर्ट, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर. ओके, मतलब क्या बोला इन्होंने कि आप जो भी यहाँ पे नंबर लोगे, वो नंबर को क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट योर टाइप कन्वर्जन इन पाइथन. Thank you for watching. Subscribe our channel and share with your friends.